What's up, guys? This is Dave. Welcome back to BitBull. I hope you all are doing well and good. Well, I am fully charged क्योंकि इस सीजन का मैं अपना फर्स्ट ट्रेड ओपन कर चुका हूँ. यस, अपना बाइनेंस पे, जिस पे बस एक ही दिन हुआ है, 24 आवर्स, 34.26% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. जस्ट $16 ही आया है अभी तक, तो साइज इज अराउंड $500. तो ये बस एक फर्स्ट स्टेप है. तो आने वाले टाइम पे जो भी मेरा पुराना व्यूअर्स है उन सबको पता है हाउ आई ट्रेड विद द ट्रेंड, क्योंकि रेस्ट का टाइम ओवर हो चुका है. मार्केट फिर से बाउंस बैक कर दिया है, तो इसका मतलब इट्स टाइम टू प्रिंट सम मनी गाइज. सो फर्स्ट ट्रेड $500 से स्टार्ट हुआ है. जैसे जैसे बिटकॉइन हर एक स्टेप ऊपर जाएगा, हर एक टाइम पे $500 to $1000 ऐड होते जाएगा एंड आई विल एंजॉय अ स्लीपलेस नाइट. क्योंकि भाई दिखने में बहुत इजी लगता है, बट यू हैव टू पुट योर सोल एंड हार्ट ऑन द लाइन टू अर्न दैट रिवॉर्ड. So anyways guys, if you want to trade with me in this season, first you have to open a Binance account. Here is my referral QR code. मैं इस पे 1 सेकेंड या 2 सेकेंड होल्ड करता हूँ, आप लोग स्कैन कर सकते हो. अदरवाइज यू विल गेट माई रेफरल कोड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. अगर आप लोग अभी सोच रहे हो कि इसका स्कैन करके क्या ही मिलेगा, क्यों भाई, यू विल गेट माई गुड लुक्स एंड माई हाई कॉन्फिडेंस. काफी नहीं है क्या, विच इज प्राइसलेस. एनीवे गाइज, लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक. सो फर्स्ट ट्रेड तो मैंने ओपन कर दिया है with a tight stop loss but no taking profit, क्योंकि बिटकॉइन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा I'm gonna leverage my trade, I'm not gonna take profit. तो फर्स्ट ट्रेड ओपन हो गया. I'm gonna definitely give all those hints कहाँ पे मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ, कहाँ पे मैं फिर से लेवरेज करने वाला हूँ. So if you want to follow my trade, you just have to do one thing. You have to like this video, subscribe this channel, and you have to come back every single day to know about all these levels. And साथ ही साथ you have to open a Binance account. If you want, you can use my referral link, or you just do whatever you like to do. That's it guys. Let's look at the Bitcoin's chart. But definitely before that, few important news जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, which is Tesla is still holding worth of $2 billion in crypto, which is only in Bitcoin. Tesla is only holding Bitcoins and which is worth around $2 billion. So that is a boost news जिसके चलते हम लोगों का कॉन्फिडेंस एंड मार्केट टोटली बूस्ट अप हो गया है. साथ ही साथ और एक चीज, वेनेजुएलन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फॉर अ न्यू 20% टैक्स फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी. सी, वेनेजुएला ने 20% टैक्स लगाया, थाईलैंड में 15% टैक्स लगाया, पोर्तुगल में नो टैक्स. ऐसा बहुत सारे ऐसे नाम लेते जाओ तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स आ जाएगा. बट इंडिया 30% टैक्स. इट्स लाइक आवर इंडिया इज डूइंग समथिंग एक्सेप्शनल. एनीवे, seriously, nobody does it better than India, because we will be giving 30% tax with 1% TDS. तो TDS का बात अभी भी कोई भी कंट्री ने नहीं किया है except India. So definitely India is doing great, exceptional, because nobody does it better. So now let's look at the Bitcoin chart, क्योंकि मैं फर्स्ट जो ट्रेड ओपन किया है with 10x leverage, which is around 42,000 somewhere. Alright, I'm gonna get into all these details later in this video. So far बिटकॉइन अपना 33,000 तक ड्रॉप होने के बाद इट इज डूइंग ग्रेट. In last 3-5 days, Bitcoin is bouncing back hugely. Not only Bitcoin, the entire market, including all those altcoins, they are bouncing back left and right. So आगे क्या है? आगे जो इधर येलो लाइन दिख रहा है, which is the major resistance, and according to my Fibonacci resistance, which is 0.618, which is a major resistance जो कि Bitcoin को सामना करना पड़ेगा. And you might know all this news क्योंकि मैं ऑलरेडी मॉर्निंग पे ही अपना ट्विटर अकाउंट पे इसके बारे में अपडेट कर दिया था कि बिटकॉइन माइट फेस अ स्लाइट और लिटिल टर्बुलेंस. रेजिस्टेंस अराउंड दिस 0.618, $44,300. सो इसके आगे क्या है एंड सपोर्ट कहाँ पे है? अगर इधर से नीचे तक आया तो हम लोगों को सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? सो इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म जहाँ पे हम लोगों का रेजिस्टेंस 44,300 पे, सेम वेज हम लोगों का जो सपोर्ट है, जिस सपोर्ट के ऊपर आई एम काउंटिंग, विच इज 41,500, मे बी 41,600 के आसपास है. तो लेट्स टेक 41,500. तो आई एम डेफिनेटली नॉट गोना टेक दिस 38,500 का जो एक सपोर्ट लेवल ऑलरेडी फिबोनाची रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग को दिखाई दे रहा है. आई एम नॉट टेकिंग दिस सपोर्ट सीरियसली बिकॉज मे बी मार्केट कंप्लीटली बाउंस बैक कर चुका है एंड वी कैन सी अ पोटेंशियल
initial W pattern, double bottom bumps, but definitely ये वाला जो 44,500 वाला resistance line है, this will be little hard for Bitcoin to overcome. But once Bitcoin overcame this 44,500, then Bitcoin के सामने blue sky ahead, क्योंकि 44,500 के बाद Bitcoin will straight go towards $50,000 and जिसके बाद बस डॉलर ही डॉलर है, क्योंकि और कोई मेजर रेजिस्टेंस आने वाले टाइम पे नहीं मिलेगा हम लोगों को. जस्ट द ओनली रेजिस्टेंस वी हैव टू फेस इन दिस इमीडिएट शॉर्ट टर्म विच इज 44,500. नाउ बैक टू 4 आवर्स कैंडलस्टिक चार्ट. ऐसे बोल सकते हैं लास्ट 3 से 4 दिनों में 4 आवर्स कैंडलस्टिक चार्ट इज स्लाइटली बेयरिश, क्योंकि वी ऑल नो कि 44,500 डॉलर का जो रेजिस्टेंस लाइन है, इधर सब आके थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि दिस इज very normal. That is why we are trading. But I am not booking any profit because I am a long runner, marathoner. So as you can see, first, after a long time, check all these candles and check this final $44,000 पे जो candle आया है, which is completely inverted, and all we can see a big week on the upside. इसके मतलब huge selling pressure. That is why ये जो next 4 hour candles अभी start हुआ है from 1:30 से लेके 5:30 तक जो चलने वाला है, which will be a very important candle to watch, क्योंकि अगर ये कैंडल रेड पे क्लोज हुआ then we might face this 42,616 का जो ये जो सपोर्ट लाइन है, मे बी वी कैन ड्रॉप टिल दिस लेवल, मे बी. सो एज यू कैन सी माई लाइव ट्रेड वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ $16 के आसपास था, विद $13.41 के आसपास हो गया है. तो एनीवे दैट इज द प्रॉफिट. ओके, आई एम नॉट वॉरिंग अबाउट ऑल दिस शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस, आई एम लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट. तो मैंने ये ट्रेड ओपन किया था 42,680 पे. तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, टाइट स्टॉप लॉस है 2% रिस्क पे, बस 2% रिस्क पे, विच इज एट 41,500 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया है. अगर बिटकॉइन का प्राइस 38,000 के आसपास चला गया तो मेरा ये पोजीशन कंप्रोमाइज हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोग उतना नीचे तक जाएंगे. मे बी वी विल टेस्ट दैट $42,500 का जो लाइन है, उसको हम फिर से एक रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएंगे. So that is all about my recent trade, and I'm gonna leverage, I'm gonna put all my money step by step as Bitcoin start climbing upside. जैसे जैसे Bitcoin हर एक लेवल क्रॉस करते जाएगा, मैं भी अपना हद पार करते जाऊंगा, जितना भी पैसा मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि that is the time when we print money. Then पूरा का पूरा साल रेस्ट करो, 2 से 3 साल कमाओ, बस enough है भाई. So again, if you are not a traditional, if you are not a experienced trader, do not follow this trade, and in case if you want to follow, please do it on your own risk. But before that, you have to have a Binance account. For that, you will get all my links in video description, starting from Binance, starting from Twitter, जहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ and साथ ही साथ न्यूज चेक करता हूँ. You might like all my updates in Twitter, so if you want, you can go down below, get all these links in my Twitter, Telegram, Binance, everything, सब कुछ लिंक नीचे मिल जाएगा. Go down below, be a part of our BitBull community, and please, I'm repeating again and again, if you are not a experienced trader, do not trade this. You can just enjoy this trade, क्योंकि मैं हर एक दिन अपडेट देने वाला हूँ. अगर मैं लिक्विड कर भी लिया, अगर मैं अपना पोजीशन कंप्रोमाइज कर भी दिया, तब भी मैं बताने वाला हूँ. एंड जब जब मैं अपना लेवरेज करने वाला हूँ, जब जब मैं और पैसा डालने वाला हूँ, हर एक दिन मैं अपडेट देने वाला हूँ अपना ट्रेडिंग का. सो मेक श्योर यू आर कमिंग बैक every single day to check my account, to check my trading. You can take all these tips as a reference and do your own study. Then you can put your money into a spot account or something and enjoy this ride, guys. So that's it from my side, guys. I hope you have liked this video, and if you haven't subscribed it yet, क्या पता लोग आपको जज करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसके बाद भी अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं कब करोगे. Anyway, you can subscribe it now. So बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dev signing off.